what's up guys, welcome back to my channel. I hope you're all doing very well. पुणेकर्स हम लोग हमेशा घूमते हैं, we explore many shopping places and आज मैं आई थी ये exhibition में. It's Sunday and I wanted to have some fun. So I have come to this exhibition जहाँ पे है handicrafts, accessories, clothes, books. They have got these books at 100 rupees kg. I'll show them also later. Show you this place. तो ये exhibition है 15-20 दिन के लिए, हमेशा होता है यहाँ पे. Alright, so we'll just have some fun, explore everything. They have also got these games for kids. तो मेला जैसे होता है ना, वैसा ही कुछ है वहाँ पे. So if you haven't yet subscribed to my channel, please make sure you subscribe to my channel and hit the bell icon so that you'll get notified whenever we are uploading any video. Alright, now without wasting any more time, let's get to the video. So we started off with the furniture. जैसे ही enter किया मैंने, I saw these tables, chairs, dining tables, wardrobes, small cupboards, beds and what not. And design सबके बहुत प्यारे थे. This is Pune का बंजारा market for now, and they have got a lot of crockeries over here. I really love crockeries and antiques and आप देख सकते हो कितने अलग अलग डिजाइन, शेप्स, स्ट्रक्चर्स, कलर्स, कितनी वैरायटी है इसमें. Oh my god, this book fair was really crazy. Books at ₹100 per kg and one could buy any books and you can see इतनी ज़्यादा वैरायटी थी books में, इतने सारे books. I just went crazy seeing this. तो इंडिया के अलग अलग प्लेसेस और रीजन से अलग अलग सेलर्स आए हैं यहाँ पे उनके आइटम्स लेके एंड दे आर सेलिंग दीज थिंग्स. देयर इज सो मच वैरायटी इन क्लॉथ्स, एक्सेसरीज, फुटवेयर, फूड मटेरियल्स, एंटिक्स, ज्वेलरी एंड व्हाट नॉट. सो दिस वाइट टॉप दैट आई हैव इन माई हैंड राइट नाउ एंड ऑल्सो दिस ब्राउन टॉप, ब्राउन सीक्वेंस टॉप, दीज फॉर जस्ट फॉर ₹100. आई थिंक समर्स के हिसाब से ये जैकेट्स एंड टॉप्स बहुत सही थे. सी दिस वाइट टॉप एक्चुअली गोज विद द समर वाइब्स एंड इवन दिस वन, अ ट्रांसपेरेंट वन, दिस वाज फॉर ₹200 or 250 something. I don't remember it properly but yeah, it is really good. Now moving on to the footwear. इस स्टॉल पे सारे फुटवेयर थे फॉर जस्ट ₹250 एंड आप देख सकते हो इसमें कितनी सारे कलेक्शन, कितनी सारी वैरायटी है. राइट फ्रॉम ट्रेडिशनल टू ऑफिस वेयर टू समर कलेक्शन, दे हैव गॉट एवरीथिंग एंड द कलर्स आर रियली गुड. नेक्स्ट आर साड़ीज एंड ड्रेस मटेरियल्स. Oh my god, this shop was completely of Indian footwear, right from Rajasthani to Punjabi jutis to Kolhapuris and what not, and everything priced at ₹200 to 250. Next up are these antiques and handicraft materials, right from wooden utensils to showpieces to clocks and frames and what not. Oh, these are all Rajasthan special bangles and I know ladies go crazy after seeing this. different prices that you have. This one is 150, madam. 350, 450, ma'am, starting rate, and the last 1250, ma'am, the bigger one. This is bag. This is you can see it all handmade, ma'am. 5-day one bag, one for bag. ये है सारे जयपुर के स्पेशल हैंडीक्राफ्ट मटेरियल्स. इनके पास है पर्सेस, एक्सेसरीज, नेक पीसेस एंड ऑल्सो दीज शो पीसेस. I am super crazy for Indian and oxidized jewelry and this section is definitely for me.
so many jhumkis and neck pieces and whatnot. They have got a lot of things on this stall. I know लड़कियों को लखनवी कुर्तीज बहुत ज़्यादा पसंद है. So here they have these लखनवी कुर्तीज with inners at rupees 1250. Can you guess the price of the sliders? This is just for rupees 150 and I'm totally in love with them. काय price है तुमसे? 700. अगेन ये स्टॉल पे भी सारी फुटवेयर है जस्ट फॉर रुपीज़ 150 और इनके पास भी बहुत सारी वैरायटी एंड काफ़ी सारा अच्छा कलेक्शन है, आप देख सकते हैं. तो हमने वो सारे स्टॉल्स कवर किए जो मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छे लगे एंड पसंद आए. सो आई होप यू लव ऑल ऑफ देम. एंड आफ्टर दिस इज द गेम सेक्शन जहाँ पे है बचपन का मेले वाला फीलिंग. सो दे हैव गॉट दिस जायंट व्हील्स एंड ऑल द गेम्स फॉर किड्स. Hope you love this video and this exhibition. I tried to show all that I found pretty okay. तो आपको भी पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना. Do like, share and subscribe. And if you want to visit this place, you can definitely come over here. It's in Pune, nearby Pune in Pimpri-Chinchwad. And I'll come up with more such videos. So yeah, please make sure you subscribe to my channel. Thank you so much for watching.